द्रुमा सपुष्पा सलिलं सपद्मं श्रियः सकामा पवना सुगन्धि सुखा प्रदोषा दिवसास्य रम्या सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते. Hello friends, how are you? Good morning. My friends, today we shall discuss lesson number 6, Sarva Charutaram Vasante, and this lesson is about the season. Which season? The spring season. Okay, and you know well that the season spring is the queen of all the seasons. Okay, so in this lesson let's discuss about the spring season, the effect of the spring, and what the effect of the spring on people. Okay, whenever we study Sanskrit, one writer we cannot forget, and that is Kalidas, Mahakavi Kalidas. Mahakavi Kalidas has contributed a lot in the development of Sanskrit literature in India. Mahakavi Kalidas is a renowned poet of Sanskrit as well as of the world, and he has written a total of 7 works, of which Malvikagnimitram, Vikramavarshiyam and Abhignan Sakuntalam are plays. Raghuvansam and Kumar Sambhavam are long poems. Long poem means Mahakavya, and Rutu Sahar and Meghdutam are Khandakavyas. Khandakavya means they are the part of a big poem. And it is believed that Kalidas was one of the 9 gems at the court of Maharaja Vikramaditya. You know well कि Vikramaditya was the king of Ujjain. आपने बचपन में वो वार्ता सुनी होगी विक्रम और वेताल की. तो वही जो राजा विक्रम थे उसी के दरबार में ये कालिदास एक महाकवि थे. On the basis it can be estimated that Kalidas lived during the first century of Vikram era, means to before 2000 years ago. And the poet has been hailed as a master of nature as well as of a simile. And on the other hand, he has personified many objects of nature in Abhignan Sakuntalam, and on the other, he has unique, vivid description of nature in Rutu Sahar and Meghdutam. Rutu Sahar and Meghdutam, they were Khandakavyas, and in these two Khandakavyas, he has described the nature in a nice way. And in this lesson, Sarva Charutaram Vasante, we shall study 5 verses, means 5 slokas describing spring. So this poem is particularly about the season spring. Spring का मतलब है वसंत ऋतु, and from Riti Sahar. We will learn how objects can be described and also the uses of Tatpurush Samas. So in this poem, Tatpurush Samas is maximum used by Kalidas, and it's a wonderful description of the season Vasant. Okay, so let's discuss all the verses in detail. Drumah sapushpah salilam sapadmam Striya sakama pavana sugandhi Sukha pradosha divasascha ramya Sarva priye charutaram vasante Sarva priye charutaram vasante. Dear friends, Drumaha means trees. Sapushpaha means with flowers. Salilam means water, and Sapadmam means lotus. कमल कहते हैं ना. तो चारों तरफ वृक्ष हैं,
पुष्प है, जो लेक होते हैं वो पानी से भरे हुए हैं और लेक में क्या है, कमल खिले हुए हैं। एंड स्त्रियः सकामाः, तो लेडीज आर फुल ऑफ लव, लेडीज आर फुल ऑफ लव, स्त्रियः सकामाः। एंड पवनः मीन्स एयर, सुगंधिः, सुगंधि मीन्स फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। सुखः प्रदोषाः, सुखः प्रदोषा दिवसाश्च रम्यः, रम्य, रम्य मीन्स प्लेजेंट। तो इवनिंग्स, इवनिंग्स आर हैप्पी एंड डेज आर प्लेजेंट। ओ प्रिय, ओ माय बिलव्ड, everything is pleasant in the season Vasant. The full translation is this: O beloved, everything is more beautiful in the spring season. The trees are all in bloom. The water in the lake is full of lotuses, and ladies are full of love. The wind is fragrant, the evenings are happy, and days are pleasant. Again, drumaha sa puspaha, drumaha sa puspaha, salilam sa padmam, striyah sa kamaha, pavanah sugandhihi, sukhaha pradosha divasasya ramya, sarva priye charutaram vasante. This is the first sloka of lesson number 6 that with the translation. वापी जलानां मणिमेखलानां शशाङ्कभाषां प्रमदाजनानाम् आम्रद्रुमाणां कुसुमानतानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्त, ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः. Dear friends, Vapi Jalanam means the full of water, the wells यानी कुआ जो पानी से भरा हुआ था. मणि मेखलानाम means कि to those who were wearing waist ornaments, यानी कि जो कमर में जो आभूषण पहनते हैं उसको कहते हैं मणि मेखला. शशांक भाषाम प्रमदा जना नाम. तो यहाँ पे जना नाम का जो शब्द है, जना नाम मीन्स पीपल, लेडीज एंड जेंट्स ऑल. शशांक भाषाम मीन्स हैविंग लस्टर लाइक दैट ऑफ द मून, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं. एंड कुसुमानतानम, बट द फर्स्ट वर्ड इज आम्र द्रुमाणाम. आम्र यानी मैंगो ट्रीज. कुसुमातानाम मीन्स कि द ट्रीज वेर बैंट विथ ब्लोजम, एंड मीन्स दे वेर द मैंगो ट्रीज बैंट विथ द लोड ऑफ फ्लावर्स. यानी कि जिसको कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो जो मैंगो ट्री होती है ना, तो उसके ऊपर छोटे छोटे आम के जो फ्लावर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोर कहते हैं. तो उसी से पूरे आम्र के वृक्ष लचे हुए हैं. ददाति सौभाग्यम वसंतम. एंड all this type of scene, they give a wonderful beauty to the nature. गुरूणि वांसासि विहाय तूर्णा तनूनि लाक्षारसरज्जितानि सुगन्धी काला गुरुदूपितानि धत्ते जनः काममदालसाङ्ग, दत्ते जनः काममदालसाङ्ग. The last word काममदालसाङ्ग means कामस्य मदः, काम मदः means
कि द बॉडी फीलिंग लेथार्जिक, द बॉडी फीलिंग लेथार्जिक ड्यू टू एक्टसी ऑफ लव, यानी कि इस स्प्रिंग सीजन में स्त्री और पुरुष का जो पूरा शरीर जो होता है वो लव की वजह से, प्यार की वजह से पूरा लेथार्जिक उसका बॉडी हो जाता है। देन गुरुणी वांसासी, गुरुणी वांसासी मीन्स हैवी गारमेंट्स, गुरुणी वांसासी मीन्स हैवी गारमेंट्स, विहाय तूर्ण, विहाय तूर्ण मीन्स गिविंग अप। तो जो एकदम हैवी गारमेंट्स जो पहने होते हैं वो हैवी गारमेंट्स उतार के दे वेयर वेरी लाइट गारमेंट्स, तनूनी लाक्षार सरिज्जितानी, एंड लाक्षार सरिज्जितानी मीन्स लाक्षायाः रसः, लाक्षायाः रसः। आपको मालूम है दोस्तों कि लाख नाम का आपने शब्द सुना होगा। एक वृक्ष का ऐसा एक रस होता है लाख, और वो लाख में से पहले के जमाने में वो डाई बनाते थे, वो कपड़े को रंग किया जाता था, उसके ऊपर ऐसी प्रिंट की जाती थी। तो उसके कपड़े के ऊपर लाख के उसके ऊपर से लाख के कपड़े को रंग किया जाता था। सुगंधी काला गुरु दुपितानी, सुगंधी काला गुरु दुपितानी, इट मीन्स विद द स्मोक ऑफ सैंडलवुड, जो चंदन का जो चंदन के लकड़े थे उसमें से वो अपने शरीर के ऊपर लेप लगाते थे और अपने पूरे बदन को वो सुगंधी बनाते थे। दत्ते जनः, दत्ते मीन्स दे वेर, दत्ते दे वेर, जनः मीन्स पीपल, एंड अभी मैंने समझाया काममदाल सांगः मीन्स सो देयर बॉडी दे वेर very lethargic due to ecstasy of love. The whole translation is like this: people whose body is lethargic due to ecstasy of love, they quickly give up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lakh and the fragrance of sandalwood they spread on their body. किम किंसुकेः सुक मुखच्छ विभिन्न भिन्नम, किम कर्णिकार कुसुमेन हतम मनोजेः, यत् कोकिलः पुनरयम मधुरेवर्चोभिः and युनान मनः सुवदनानि हितम निहंति. So the translation is like this: कि is not the mind of the youths interested in ladies with beautiful faces broken by kesuda flowers, bright like the beak of the parrot? Is it not defeated by the beautiful karnikar flowers? Why then this kokila means cuckoo bird is killing it again by its sweet notes or sweet words? So my dear friends, this is wonderful description of the season Vasant, okay, and it has been written by Mahakavi Kalidas, and it has been taken from Rutu Sahar. So my dear friends, all the slokas, you please once again you read it, you try to understand and find out and write down all the slokas and translation in your notebook. Okay my dear friends, thank you.